guys, welcome back to my channel. So guys, in this video I will tell you to make the flute for Kanha ji. So first item that we need is the pants refill. You can see the refill. I have cut it according to the size which I needed, so you can see the size of my refill. And then we need the glue gun for pasting, so you can paste it using the Fevicol also. Then I have taken the ribbon to cover up the refill. So I have welded the both ends of the ribbon. So if you have taken ribbon, so weld the both ends of the ribbon well. You, in place of ribbon, you can take the lace, any lace also, it's your choice. Then for decoration I have taken a hanging, a colored hanging. And then I have taken the stones, some stones for decoration. So let's get started with our flute. So guys, now I will show you the pattern in which I will paste the ribbon. So this is the pattern. So this was a rough this I roughly show you. Now I will start pasting. Firstly I applied the glue on the whole refill, but now I started applying on the small portion. Then I will paste the ribbon, then again I will apply on the small portion, then I will paste the ribbon. So guys, please apply less glue as I applied more. Now again I will apply the glue. So guys, please see the thickness of the refill. I have taken the thick refill because थिक रिफिल से जो हमारी फ्लूट है वो बहुत अच्छे से बन जाएगी. And I pasted the ribbon here, you can see. Now here I will paste the glue on the ribbon as well. I will apply the glue on the ribbon. You can see. Now here I am applying the glue on the ribbon as well. So guys, this is the best out of waste video. These all were the waste material, means fill is waste. And the hanging जो थी ये डेकोरेशन के लिए जो मैं लगाऊंगी, वो हैंगिंग मेरी ड्रेस से निकल गई थी, तो फिर मैंने इसमें यूज़ कर ली, वो ऐसी वेस्ट पड़ी थी. एंड द रिबिन या लेस कुछ ना कुछ तो घर पर होता ही है. सो दिस इज़ द कम्प्लीटली बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वीडियो. सो गाइज, नाउ आई विल पेस्ट द हैंगिंग. सो मैं ये पेस्ट कर रही हूँ बिकॉज मुझे हैंग करने के लिए स्पेस नहीं दिखा. एंड जो है हमारी हैंगिंग इज़ नॉट गुड, मीन्स pasting is better than hanging. So guys, now I will paste some stones at the back part of the flute. You can see I am pasting the stones. So आप stones पर glue apply मत कीजिएगा, आप डायरेक्टली जहाँ पर आप मीन्स मैंने क्या किया है, जहाँ पर मुझे stones लगाने मैंने वहाँ पर अप्लाई किया glue and then I pasted the stones. बिकॉज अगर आप स्टोन पे अप्लाई करेंगे तो वो आपके हैंड पर आएगा. एंड ये 2 स्टोन्स हट गए थे, तो फिर मैंने उनको हटा दिया और फिर बाद में थोड़े से स्टोन्स पेस्ट कर दिए.
You can see I'm pasting the stones. यू कैन सी नाउ. अब ये हमारी फ्लूट रेडी है. एंड गाइस मैंने यहाँ पे ये वाली शेल भी इसमें ऐड कर दी थी, पेस्ट कर दी थी, बिकॉज हमारी हैंगिंग में शेल थी. सो मैंने यहाँ पर भी एक और शेल लगा दी. एंड गाइस यू कैन सी द लुक. एंड बैक में मैंने वन स्टोन लगाया ओनली, बिकॉज मैंने सारे ग्लू रिमूव करके फिर से ही वन स्टोन लगाया था. सो मीन सब कुछ ये हैंगिंग सब छिटाकर ग्लू हटाकर फिर से पेस्ट की थी. एंड नाउ यू कैन सी द लुक. And now please like and share my video, subscribe to my channel, also turn on the bell icon for receiving the notification from my channel. And bye.